Good morning, students. Today is the last unit of special transaction chapter, that is account current. Today we are going to see it in detail, but before that, quick revision of our accounts. So basically, accounts is divided in two parts: traditional approach and modern approach. Traditional approach talks about debit the debtor, credit the creditor for the personal account, and debit the receiver for credit the giver is a receiving giving relationship. So there are two relationships: due relationships and receiving giving relationship. Due relationship, debtor becomes giver, creditor becomes receiver is the first one. Real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So modern approach talks about asset minus liability is equal to capital, asset debit balance, liability credit balance, capital credit balance. Income minus expenses is equal to profit, income credit balance, expense debit balance, and profit has a credit balance. Friends, basic rules of accounts are very, very important. Normally, we take revisions of these basic rules of accounts and plus journal entries, very important in your session. But today we have lack of time, so next time when I come for the batch for partnership, we will take some basic entries so that you can revise first chapter also. Revisions are very important in this course. Special transaction, first unit is bill of exchange. Bill of exchange, please try to understand books of drawer and books of drawee. Match my speed and write it in the comment section after understanding all this revision. Yes, better write it in the comment section that is, sir, we match your speed. Okay, so we match your speed, aapko likhna hai at the end. So first one, books of drawer, first entry will be debtors account or drawee account debit to sales. Second entry will be bills receivable account debit to debtors or drawee. After that, bill receivable has four conditions. So number one situation, number one, bill written, no entry. Bill discounted, bank account debit, discount account debit to bills receivable. Then bill endorsed, creditors account debit to bills receivable, and bill sent for collection account debit to bills receivable. So these are some entries regarding bill of exchange, four situations. Then on due date, bill is honored and bill is dishonored. In case of bill honor, first entry will be bank account debit to bills receivable. Second situation, no entry. Third situation, no entry. And last situation, bank account debit to bill sent for collection. After that, if bill dishonor, then debtors account debit to creditors account. After that, second entry will be data, sorry, first entry debtors to bills receivable, second situation debtors to bank, third situation debtors to creditors, and last situation debtors account debit to bills sent for collection. Debtor means drawee, okay, drawee or debtors. After that, if bill is in the books of drawee, first entry will be purchases account debit to creditors, second entry will be creditors account debit to bills payable. एक second, I will open this screen. Okay, ठीक है. So after that, beta, yes, first entry will be purchases account debit to creditors, creditors account debit to bills payable account debit to bank, and in case of dishonor, bills payable account debit to creditors. So these are entries regarding bill of exchange. After that, goods sent on approval basis is divided in three parts. First one is casual approach, second one is frequent approach, and last one is numerous approach. In case of casual approach, first entry will be at the time of dispatching goods, debtors account debit to sales, and at the time of accepting goods, you don't have to, that is at invoice price, sorry, debtors to sales is at invoice price. If you accept goods, you will pass the entry by difference, debtors account debit to sales. In case of selling price is greater than invoice price, and if selling price is less than invoice price, in that case, sales account debit to debtors account for difference. And remember, if invoice price is equal to selling price, in that case, no entry. If goods are rejected, entry will be sales account debit to debtors by invoice price amount. But on 31st of March, you have to pass two entries, that you have to reverse your sales account debit to debtors. And in case of last entry, goods lying with customer account debit to trading account, that is at cost or NRV, whichever is lower. So invoice price or cost, whichever is lower, you have to pass that entry. So in case of frequent approach, you have to prepare four columns. First column will be goods dispatch, then goods rejected, then goods accepted, and balance. For goods accepted, your entry will be debtors account debit to sales, and in case of balance, goods lying with customer account debit to trading account, don't pass entry for dispatch and goods rejected. After that, memorandum books and normal books. Memorandum books means you have to prepare one account. In the books of memorandum book, you have to pass entry debtors account debit to sale or return account. Then in case of acceptance or rejections, this entry will be get reverse, sales or return account debit to debtors account. And remember, balance entry, balance amount in sales or return account, you will pass in the general book. So in general books, you will pass entry only if goods are sold. So debtors account debit to sales, and next entry will be goods lying with customer account debit to trading account. क्विक रिवीजन, यदि आपको ये रिवीजन समझ में आ रही है तो बेटा आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, इतना याद रखो.
In case of consignment, so last approach is a third unit will be a consignment. Consignment chapter में आपने देखा था consignment account debit to goods sent or consignment. Second entry will be consignor incurred expenses, consignment account debit to cash. Next entry will be consignee incurred expenses, consignee account debit to consignment. After that, consignee incurred expenses consignment का खर्चा है तो consignment account debit to consignee. After that, goods sold by consignee. Consignee is a debtor, so consignee account debit to consignment. Remember, consignment is account is prepared instead of real nominal accounts, and consignment is a nominal account. We normally prepare regular books of accounts में normal expense and income transactions, but here we open consignment account. Then after that, for next entry will be commission, consignment account debit to consignee account, and bills accepted, consignee bills credit होगा और bills receivable will be debited. So bills receivable account debit to consignee. In case of cash remitted, cash or bank account debit to consignee account, and after that, next entry stock on consignment to consignment, consignment to P&L for profit and losses के लिए P&L account debit to consignment, and last entry will be goods sent on consignment account debit to trading account. Friends, in case of average due date, base date plus or minus total product upon total difference, and suppose a total amount, and in case of difference in product upon difference in amount, formula, when there will be this formula, X goods send goods to Y and Y sold goods to X, in that case you will use the formula base date plus or minus total difference in the product and difference in the amount. It will be a denominator. So this is a quick revision for 8 minutes. I hope आपको सब याद आ रहा है. Yes, मैच करना बहुत जरूरी है. Good morning, good morning, good morning to all of you. यस, मनीष जैन ने, आयशा गुड मॉर्निंग बेटा, तन्मित कौर, रिचा कुमारी, डिम्पल, आदित्य जी, श्रेया तिवारी जी, आरपी. यस बेटा, सॉरी, हियर यूनिट नंबर इज 5. इज नॉट यूनिट नंबर 6, गलती से हो गया है. यूनिट 5 अकाउंट करंट, and we are going to start with account current. I match your speed. Very good beta. Good morning sir. Bhumika Chauhan, Kirti, Astha, very good morning beta. चलिए, so today's topic, last unit, account current. Now, before starting any chapter or any unit, first we ask to ourselves, sir, why this unit? See, revision was very fast. Now regular better unit, so I will be very slow now. तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. 8 मिनट्स में मुझे पूरे यूनिट्स रिवाइज करने रहते, तो आप भी समझ सकते हो कि मुझे कितना फास्ट बोलना पड़ता है. तो अभी अच्छे से समझ लो व्हाई अकाउंट करंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई अकाउंट करंट. सी, एवरेज ड्यू डेट, in that chapter we pass entry, we calculated one due date, and for that due date, if you are making a single payment, if you are making a single payment, in that case, how to calculate interest? It either interest saved or either or interest paid. Okay, so account current में the scenario is different. In average due date, scenario is that you will calculate average due date and you will make a single payment. You will make a single payment. But sir, if we are making payments after due date on different dates, then sir, whether ADD is applicable? No. In that case, you have to understand the chapter account current. See the difference between two chapters. In average due date, you will make a single payment. That is either after average due date or before average due date, or it might be on average due date. But friends, if you are not making a single payment, you are paying transaction wise. And if you are paying after credit period is getting over or before credit period is getting over, in that case, how to prepare a statement is called as account current. So दोनों चैप्टर के बीच में एक ही डिफरेंस है. एक में एक ही दिन पे पूरा पेमेंट होगा और दूसरे में ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, पर पेमेंट्स आर ऑन डिफरेंट डेट. डिफरेंट डेट्स पे पेमेंट होंगे, तो फिर तो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, तो फिर सिलेबस में डाल दिया अकाउंट करंट.
So you understood why this chapter? Yes, tell me it in comment section. Why this chapter? चलो जल्दी से. Yes, concentrate. क्यों रे बेटा, क्यों है ये चैप्टर? चलो मेरे फ्रेंड्स लोग जल्दी जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में. To pay on different dates, either after due date or before due date. Very good. Shreya Tiwari. Manish Jain is saying, sir, your voice is lagging. ऐसा कुछ हो रहा है क्या? Ritu Tiwari, you are exactly answering. Beta, wrong answer. Beta, if you are not making a single payment, in that case, how to calculate interest? Ritu Tiwari, समझ ले बेटा, एवरेज ड्यू डेट में एक टाइम पे पेमेंट होता है. डिफरेंट डेट्स पे पेमेंट रहेगा तो एवरेज ड्यू डेट वोंट वर्कआउट. तो डिफरेंट डेट्स पे आप पेमेंट कर रहे हो तो अकाउंट करंट चैप्टर काम में आता है. ओके, इफ मल्टीपल पेमेंट. ठीक है. सो अकाउंट करंट, राइट डाउन इन योर नोटबुक, 100 पेजेस नोटबुक. 100 पेजेस के नोटबुक में लिखो. चलो जल्दी से. अकाउंट करंट, अकाउंट करंट, अकाउंट करंट is a running statement. Account current is a running statement of transactions, of transactions. Sorry. Between parties for a given period of time and includes interest allowed or charged on various items. Interest has to be calculated on frequent transaction. You can use this in consignment if you're not making a single day payment. Bankers. Now, this is very important. And last part is in case of joint venture. In case of joint venture. Chalo, jaldi se likho. 100 pages notebook. You can write this and write down over in comment section after writing. चलो जल्दी लिखो. Write down on 100 pages notebook, beta. And write down over. प्लीज राइट डाउन ओवर. जल्दी जल्दी लिखो.
Are you maintaining 100 pages notebook? Are you following my tips, beta? Many of you are not following my tips. Up, please, you don't think for today. Always think for the future. Before 20 days, 30 days of your exam. If you're not following 100 pages notebook, 400 pages notebook, it will be difficult at the time of revision. Said G. Thank you, beta. I love the way you teach and you are so positive. Even though I have joined too late for LVC, I don't want to miss any lecture of yours. Yes, very good. Beta, welcome to Board of Studies classes. And I hope you are watching my previous sessions. Said madam. Yes, Aisha. Good beta. चलिए. So over. ठीक है. Let's move to next concept. Now difference statement of account and account current. See, if you are getting passbook from bank, so normally bank is giving you passbook only of amount without any calculation. It's simply a ledger. But if account current gives you a calculation and plus amount which is due, calculation of interest also. Interest भी बहुत important है. So account current ये क्या है? Details of transactions including interest calculation. So see, interest calculation जहां पे रहेगा वो account हमारा account current होगा. Yes. So write down difference in statement of account and account current. सिंपल लेजर होगा तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ध्यान में रखो. See now what happens normally when I sold goods to someone. Okay. Yeah, I purchase goods from suppose party X. If I purchase goods from party X, so I have to match in case of GST calculation, my purchases must match with sales of Mr. X. So that is if I called him and Mr. X and asked him for giving me statement of account कि please मुझे मेरा statement of account भेज दीजिए. मेरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेज दीजिए. ये मैं किसको बोलूंगा? मिस्टर एक्स को. बट सपोज इफ आई आस्क हिम इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो मैं उसको इंटरेस्ट के कैलकुलेशन पूछता हूं तो अकाउंट करंट स्टेटमेंट में भेजने वाला हूं. कौन सा स्टेटमेंट? अकाउंट करंट स्टेटमेंट. सो अकाउंट करंट स्टेटमेंट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन. ओके, सो इसीलिए तो सीखना है. नॉर्मल स्टेटमेंट माय परचेस हिज सेल्स. अकाउंट करंट कैलकुलेशंस purchases plus my payment plus interest calculation. In his statement, sales account plus receipts plus beta payment interest calculation. तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ जो स्टेटमेंट आता है वो अकाउंट करंट होता है और सिर्फ परचेस सेल का एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन होगा तो वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है. यू गॉट द डिफरेंस? इजी है. हैव यू रिटर्न बेटा? हो गया लिख के? यस. We want to reach at maximum students better, not only a specific area or something. So at Board of Studies, we are trying our best. I know our faculties and those who are in writing of study material, so बेटा those are also trying to avoid all mistakes. और वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके स्टडी मटेरियल के ऊपर. इट्स वेरी डिफिकल्ट. गलतियां निकालना इज वेरी सिंपल बट राइट स्टडी मटेरियल, राइटिंग ऑफ स्टडी मटेरियल बेटा इट्स वेरी डिफिकल्ट मेनी टाइम्स. क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के टीचर्स कुछ अलग बताते हैं और बहुत सारे चेंजेस हम लोग लेके आ रहे हैं. बट बेटा आप लोग प्लीज रीड स्टडी मटेरियल थॉरली. एवरी टाइम आई एम
telling you these things keep for not only for my subject, but if you read study material properly for accounts, definitely, I mean, if you are practicing it for minimum 2 to 3 times, आज लिख लो, your score will be more than 80 marks. More than 80 marks. चलो. Now, how to write the answer? Okay, how to write the answer? So, what is the meaning? F is in account current with M. So, it's not books of किसके books है और किसका account है. So, ये लिखने का तरीका है. How to write whose books and whose account. So, simple one. F in account current with M. What do you think? Whose books, beta? F के books या M के books? You only tell me whose books and whose account. चलो देखते हैं. देखते who is writing the answer, giving the answer. F is in account current with M. F is in account current with M. चलो, F is in account current with M. Tell me किसके books and किसका account. चलो fast. Very good बेटा भूमिका. Very good. भूमिका ने लिखा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ओनली परचेज सेल एंड अकाउंट करंट सेल परचेज इंटरेस्ट कैलकुलेशन. वेरी गुड. अकाउंट सेल नहीं बेटा, अकाउंट करंट. यस, वेरी गुड. Who wrote very fast? Aisha. Aisha, very good बेटा. M के books, F का account. F का account, M के books. Okay, write down. Write down. F का account, M के books. Very good. चलो, write down बेटा. Statement is submitted by M to F. Very good. So write down this. Red pen, red pen. Write down by red pen. Everyone has written it properly. So F in account current with M means F ka account and M ke books. Chalo, tell me if Mona ma'am is rendering Sanket sir's account. So how you are going to write it? Chalo, give me answer. Mona ma'am is rendering Sanket sir's account. How you are going to write this? Mona ma'am is rendering Sanket sir's account. चलो टेल मी. जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो. Yes. And how you are going to write it? Who wrote very fast? Aditya. SS in account current with Mona. Very good. So much respect, beta. Mona ma'am. Very good. SS in account current with Mona ma'am. Very good. So SS in account current with Mona ma'am. ए बेटा अरविंद क्या कर रहा है रे? गलत जवाब. संकेत सर के बुक कैसे होंगे? मोना मैम भेज रहे हैं ना स्टेटमेंट, तो मोना मैम के बुक्स में संकेत सर का अकाउंट होगा. सो एसएस इन अकाउंट करंट विथ मोना मैम. Yes. Now, how many methods are there? There are 3 methods: product method, balance method, and interest method. So write down these methods: product method, balance method, and interest method. Product of balance method and interest method. And in product method, you have 2 methods: forward and epoch. So just note down all these things. I'm going to take examples. So this is in your 100 pages book. 100 pages book में लिख के रखना ये.
Yes, Ankur, I can see your comments बेटा. आज ऐप को कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? जियो वालों का कुछ मैंने डिस्कशन देखा कि ऐप पे टेलीग्राम चैनल पे कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन ऐप, बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप. तो कुछ आ रहा है क्या आप लोगों को भी? सो आई विल इन्फॉर्म टेक्निकल पीपल कि जियो नेटवर्क जिनका है उनको ऐप का प्रॉब्लम आ रहा था. राइट डाउन. चलो. So we will move to next concept. Write down product method pro forma. Product method pro forma. Product method pro forma. F in account current with M. So what are columns? Better write down date, particulars in 100 pages notebook only. Due date, rupees. Just note down this. Write down this pro forma before one day exam. It's very important. Format over. Write down this for pro forma date, particulars, due date, rupees, dates, product, date, particulars, due date, rupees, dates, product.
नेक्स्ट, ऐप वर्किंग नहीं हो रहा है आज। Usually in bank book, product of balance method, write down this. Whatever I have given, 1, 2, 3, 4, please note down this pro forma. I'm going to explain it in detail, so don't worry. Just note down this pro forma. Note down this pro forma. I'm giving you exactly 5 minutes. Yes. Please give numberings 1, 2, 3, 4. Proper numberings दीजिए 1, 2, 3, 4. Numberings important है. This is something which is different. So आप प्लीज ध्यान देना ये कैलकुलेशन पे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are 10 numbers. This is important method and these are all proformas of this chapter. And after getting proformas and while writing proformas, focus कीजिए. Just note down with focus. At least try to recall numberings. 1 is for debit or credit balance, 2 for days calculation, 3 interest you are going to note down. Then after that, 4 you will write it in days columns. Number 4th column में बताऊंगा. 5 that is the last transaction होता है. 4 number. Debit product, credit product, 5 number. Then you will take a total 6 number. Then you will calculate 7 pay interest. Then you will write by oblique 2 and then you will do the total of debit and credit and 10 number is your balancing figure. So this is how you have to write it in exam sequence. Sequence is just for how to recall this answer. तो इसीलिए सीक्वेंस दिया है. जय जी, ये प्रॉब्लम दे रहा है. ऐप ओपन नहीं हो रहा है. जय सर. तुझे नाही होते ना. जय जी, मुझे ऐप ही ओपन नहीं हो रहा है दोनों मोबाइल पे. होता है क्या ओपन?
ओवर बेटा. Beta Ankur Verma, please write down just all these things. I'm going to explain it. नाही होत आहे ना. ऐक ना, डू इट ऑन एअरटेल. जिओ वरती प्रॉब्लेम आहे. वायफाय बंद कर. जिओच्या ऍपला सगळ्यांना प्रॉब्लेम आहे. एव्हरीवन इज गेटिंग प्रॉब्लेम ना बेटा. या जिओच्या वायफायला प्रॉब्लेम आहे. मला इथं होत नव्हतं, तिकडचं कनेक्ट केलं तर झालं लागेल. Okay, now it's working. ठीक है. Some problem is going on. Okay. Yes. Now we'll start with question answers part. चलो अभी we will start with question answer part बेटा. चलिए. So now we have finished with this different methods. No problem. Chalo. So product of balance method we have finished. F in account current with bank period and two. So these are different numberings and I'm going to explain you all these things in detail. This is your completion of 100 pages notebook at the time of revision. Now you can watch this notebook beta. You can refer your notebook and then we will start with beta. Interest is very simple. Chalo. So let's open your 400 pages notebook. 400 pages की notebook open कीजिए. Write down index. Write down index. Take a screenshot. Take a screenshot of index and do it afterwards. First two questions. Yes. Screenshot लीजिए. Third question and fourth question. Take screenshots. Fifth, sixth. Epoch method and balance method. You have one example. Epoch method. Example and 7 number index. And last question is 8 number. TYK are very easy. Okay, so let's start. We'll start with illustration number 1. Chalo. Index, you can write it afterwards. 8 illustrations, and we will start with after 3 pages, 3 to 4 pages, write down ILU 1. ILU 1.
Take on 2 pages बेटा, write down on 2 pages. 2 pages के ऊपर आमने सामने के debit side on the left page and credit side on the right page. Prepare account current with Nath Brothers. For Nath Brothers with Sham. So बेटा books किसके? Nath Brothers. So Nath Brothers books you can write here, and Sham is account. So Nath brother. So tell me whether Nath brother is in account current with Sham or Sham in account current with Nath brothers. So answer is very simple. Sham is in account current with Nath brothers. Sham in account current with Nath brothers. Okay. Sham in account current with Nath brothers. So write down middle of the page beta, on 2 pages के बीच में लिखो Sham. In exam also you can take it on 2 pages. Sham is in account current with Nath brothers. Sham in account current with Nath brothers. Interest up to first Feb, because you want to give this statement on first Feb at the rate of 6% per annum. At the rate of 6% per annum. Okay. Write down columns. Write down columns. Date. Whenever you are writing on the left page, I always go from right to left. Product, then dates, then beta amount, then due date, then particulars, and then date. Always write from right to left in exam. When you are preparing columns, always write from right to left. तो हमेशा याद रखो right to left columns draw कीजिए, मतलब लिखते टाइम, so you will get proper space. Product, days, amount, due date, particulars, and date. Particulars and date. लिखो जल्दी जल्दी बेटा. Date, particulars, due date, amount, dates, products. Over. Chale. Now we are going to write it on debit side or credit side. Goods sold to Sham. Goods sold to Sham. So what is the entry? Sham को debit होगा. Sham account is debited to sales.
डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स. राइट डाउन ऑन क्वेश्चन. टू सेल्स. कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम. So now you only write it. श्याम को क्रेडिट बिकॉज ही इज अ डेटर बाय कैश. श्याम के क्रेडिट में बाय कैश. परचेसेस. परचेसेस टू श्याम. सो श्याम को क्रेडिट बाय परचेस. पेड टू श्याम. श्याम डेबिट टू कैश. डेबिट में टू कैश. डेबिट में टू कैश. परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम बाय परचेस. सेम थिंग बाय परचेस. पेड टू श्याम to cash and goods sold to Sham to sales. Have you written this? Yes. चलो. Now we will write it on. Yes. Study material पे लिख दो पहले. You write it on study material. Now we will write it on notebook. तो चलो notebook में लिखते हैं अभी. चलिए. 16 September. Date 16 September. Two sales. 1st October is a due date. 1st October is a due date. Amount 200. Leave at least one line after every transaction. Huh? Next. Buy cash. October 1. October 1 में लिखो. Days we will calculate afterwards. October 1. Buy cash. What is due date? Due date is same. 1st October. चलो. Make remaining posting. चलो fast. Though you are getting wrong answer, make post. Do posting बेटा. Do posting. चलो जल्दी जल्दी पोस्टिंग करो. बाय परचेस देन ड्यू डेट इज देयर. सी कैश को कभी ड्यू डेट नहीं आएगा. कैश को ड्यू डेट नहीं आएगा. परचेस सेल्स को ऑलवेज ड्यू डेट विल बी देयर. So 21st October by purchase I will write. What is due date? Purchase sale को due date होगा December 1. December 1 is a due date. December 1 is a due date. Then next is 1st November. 1st November. To cash. To cash. $330. Goods purchase. By purchase. 5th December. By purchase.
1st Jan. Then buy purchase 10 December, 1st Jan. January 1 to cash 1st Jan 600. January 9 to sales 1st Feb 20. Okay, so we have done pura posting. Now what to do? Now what to do, beta? Calculation of dates. I will show you two calculation. Now 16 September, nahi, 1st October, due date to 1st February. ड्यू डेट टू 1st February. नाउ अक्टूबर के कितने डेज? अक्टूबर के 21 रिमेनिंग, 31 है ना, सो अक्टूबर 21, नवंबर 30, जनवरी 31, सॉरी डिसम्बर 31, जनवरी 31, फेब्रुवरी 1. सो व्हाट इज द टोटल? 21 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 1. लिखो. सॉरी बेटा, मेरा फर्स्ट डेट गलत हुआ, 11 लिया मैंने, सॉरी गलती से. दिस इज 30, दिस इज 30. 30 प्लस 30 प्लस 31, क्या हुआ आज? 30 प्लस 31, 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 1, 123 days. हाँ, नाउ इट्स करेक्ट, 123. सो जस्ट नोट डाउन ऑल डेज. नवंबर 29, डिसम्बर 31, जनवरी 31, फेब्रुवरी 1. 29, 31, 31, 92. 1st December, 30, जनवरी का 31, फेब्रुवरी का 1 डे, 62. जनवरी 30 प्लस फेब्रुवरी 1, 31. 1st February to 1st February 0. 1/12 का ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड 62. 1 जनवरी का भी वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड 31, 31. Any difficulty till now? Any difficulty till now? No? चलो. Now 200 into 130 मेमोरी प्लस. मेमोरी प्लस का फंक्शन यूज कीजिए. 200 into 123, ओनली वन सा बेटा, 123 मेमोरी प्लस 24,600. नेक्स्ट 330 into 92 मेमोरी प्लस 30,360. 330 into 62 memory plus 20,460. 600 into 31 memory plus 18,600 and 0. Just press memory recall only once. What is the total you are getting? Yes, tell me it in comment section. Total क्या मिल रहा है आपको? टोटल कितना मिला? मेमोरी प्लस फंक्शन का टोटल कितना मिला? Yes, beta, I was wrong. Yes, Manish Jain,
Manish Jain answered it correctly. 94020. Just write down on top of the page 94020. Then beta, अरे अमाउंट मेरे रह गए क्या? अमाउंट रह गए लिखना 91 मतलब इधर भी 123. अच्छा ये बराबर था 90, 500, 500, 200 and 123, 62, 31 and 31. Yes, अमाउंट लिखना रह गया था मेरा. Okay. Now 90 into 123, memory minus 11070. 500 into 62, memory minus 31,000. 500 into 31, memory minus 15,500. And 200 into 31, memory minus 6,200. And press memory recall. Yes, what is the amount that you are getting? 30,250. Debit is more. Debit is more by 30,250. Memory recall. So right hand side मैंने ये सब memory plus में डाले थे and product memory minus में डाला. So whatever amount I'm getting is memory recall, that is 30,250. Debit is more. $94,020. Beta, we are not going to meet on Saturday. Now my session will be from Monday. Monday से मेरा session होगा. So I am getting the answer 30,250. Now you write for red pen. 1st February. First we will do balance of product. Balance of product. This is number 1. Balance of product number 1. 30,250. So product का balance कितना है? Yes, product balance is 30,250. Then always remember, on the opposite side of balance of product, you will write on the same line to interest. To interest. And interest you will always consider in product method for 1 day. Now why 1 day? I will tell you it after interest method. So after interest method I will tell you. Okay. So product method mein we will calculate interest for 1 day. How to calculate? 30,250 into 6%. Into 6%. And for 1 day it is 1 upon 365. So this is second calculation. Second calculation into 6% divided by 365. In amount column, you will write, 4.97. Amount column में लिखना है. Amount column you will write 4.97. And now you will take total of amount column. So first किसका balance लिया? First balance of product. Number 1. Second one, interest for 1 day. So product amount balance जो भी आया, step 1 में जो भी आया into interest rate into 1 upon 365. And number 3, balance of amount लेंगे. Number 3 पे balance of amount. Take balance of amount 200 plus 330 plus 330 plus 600 plus 20. So you will get 1480. And by balance of amount, 84.97.
₹4 रह गया था। 1484.97 माइनस 90 माइनस 1000 500 माइनस 200 194.97. This is a third column. Are you getting this? $194.97. Yes, easy che. Tell me. Yes or no? You can take ₹5. You can take ₹5 instead of rounding of 4.97. You can take ₹5. चिल्लर में मत खेलो. But for exact calculation in exam you can write 5. But exam में आप लोग लिख सकते हो. Don't worry. ₹5 वगैरह लिख सकते हो. Is it easy? ₹5 वगैरह लिख. अरे बेटा सिंपल कैलकुलेशन है. एवरेज ड्यू डेट से इजी चैप्टर है. एवरेज ड्यू डेट और सेम है. अकाउंट करंट स्कोरिंग टॉपिक थोड़ा सा नया टॉपिक है. सो यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट. सर समटाइम व्हाट हैपेंस नाउ दिस ड्यू डेट is after 1st February. This due date is after 1st February. Okay, so in that case you will write days in negative sign. You will write days in negative sign. Okay, so days को आपको negative sign में लिखना है. Days को आपको negative sign में लिखना है. Now yes, side वाला page number 1 पे what you close बेटा. चलो, what is the sequence? First you will do this calculation. Then बेटा what is the sequence? Balance of product, interest for 1 day, and then balance of amount. Okay, very simple question. Very simple question. Very simple. बेटा भूमिका देख बेटा एकदम इजी है. सी बेटा भूमिका देख बेटा हमें क्या करना है. मैं एक बार हिंदी में समझा देता हूं. आपको सभी कॉलम्स तैयार करने हैं. नंबरिंग क्या डिफिकल्ट था बेटा. सबसे पहले हमें क्या करना है. देखो मैं एक बार आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं. आप पहले क्वेश्चन पे 2 सेल्स बाय कैश लिख लोगे. देन यू विल राइट ड्यू डेट्स. ड्यू डेट्स इज गिवन इन द क्वेश्चन. ड्यू डेट किसके होते हैं. सी ड्यू डेट मतलब जिस दिन पेमेंट आपको मोहलत दिया. सो परचेस के बाद मोहलत मिलेगा ना. सेल्स के बाद मोहलत मिलेगा. मींस टाइम जो आपको मिलता है. सो टाइम जो आपको मिला इसको हम लोग बोलते हैं कि हमें टाइम पीरियड मिला. तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम क्रेडिट पीरियड बोलते हैं. सो ड्यू डेट किसके लिए होगा. परचेस सेल ट्रांजैक्शन. सर मैंने कैश दिया. कैश को को ड्यू डेट. तो कैश के केस में देखो. कैश के केस में जो दिन पे कैश पे किया उसी दिन का ड्यू डेट होगा. सो ड्यू डेट ये किसके लिए होगा. परचेस सेल्स के लिए. ये दिमाग में बैठ गया. यस सर ये समझ में आया. फिर क्या अमाउंट्स मैंने लिख दी. फिर क्या किया. ड्यू डेट से लेके
स्टेटमेंट डेट तक, ड्यू डेट से लेके स्टेटमेंट डेट तक मैंने डेट्स कैलकुलेट किए। सर डेट्स कैलकुलेट कर लिए, ओके, और ये इधर भी डेट्स कैलकुलेट कर लिए, ओके। सो डेट्स कैलकुलेशन बहुत सिंपल था। फिर क्या किया मैंने, डेट कैलकुलेशन जो किए और जो अमाउंट था, अमाउंट और डेट्स, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया। सो अमाउंट और डेट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया। सो अमाउंट और डेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे प्रोडक्ट मिला। मुझे क्या मिला? प्रोडक्ट। ओके, सो प्रोडक्ट बेटा, फिर शॉर्टकट, फिर मैं प्रोडक्ट करूंगा, उसकी टोटल लूंगा। तो सी ना, मेरे पास कैल्सी है, कैल्सी को मैंने मेमोरी प्लस का फंक्शन है, मेरे मेमोरी में तो नहीं रहेगा, पर कैल्सी के पास वो दिमाग है कि उसके मेमोरी में रहता है। तो मैंने अमाउंट और डेट्स को मल्टीप्लाई करके एम प्लस, लेफ्ट साले सब एम प्लस में डाले, एम माइनस में सब राइट वाले डाले, और फिर मैंने मेमोरी रिकॉल का बटन दबाया। ओके, सो मेमोरी रिकॉल मेरा कितना आया? नंबर 1 पे 30,250, ये मेरा मेमोरी रिकॉल करके आया। अभी मेमोरी रिकॉल करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं 1 डे का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। नंबर 2 पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। कितने दिन का? सर 1 दिन का इंटरेस्ट। एक ही दिन का? हाँ सर, क्यों बताता हूं, थोड़ी देर बाद पिक्चर क्लियर होगा। 1 दिन का इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट किया? सो 1 दिन का इंटरेस्ट मैंने अपोजिट साइड पे जो बैलेंस आया उसका 6% से मल्टीप्लाई किया इंटरेस्ट रेट से, और इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करके 1/365 किया। सो 1 डे का इंटरेस्ट आने के बाद सर मैंने वो 4.97 अमाउंट कॉलम में लिखा, और तीसरे नंबर पे मैंने अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग किया। तो मुझे मुझे यहाँ पे क्या समझ में आया कि श्याम भाई से मुझे इंटरेस्ट के साथ कितना अमाउंट लेना है, मुझे इंटरेस्ट के साथ 194.97 की अमाउंट लेनी है। ये मेरा स्टेटमेंट मतलब विथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा। तो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं रहता तो 190 रुपीज लिया रहता, इंटरेस्ट के साथ 194.97 लूंगा। ये होता है अकाउंट करंट। बेटा भूमिका, नाउ यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? वेरी इजी, वेरी इजी। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है क्या बेटा तुझे? अभी बता बेटा भूमिका। अदर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स इजी। अरे कुछ नहीं है रे, दिस इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है रे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। चलो आज ब्रेक नहीं दूंगा मैं, आज ब्रेक नहीं, 1 सवा बजे छोड़ दूंगा, सिर्फ 10 मिनट ब्रेक में जाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ ब्रेक आज के दिन हम लोग 2 घंटा बैठेंगे संकेत सर के साथ। पानी भी नहीं पी लो, चलो 2 मिनट मेरे साथ में चाय पीता हूँ, 2 मिनट का ब्रेक होगा, ब्रेक नहीं बोलेंगे, इसी साथ चलो। ओके, टुडे देयर विल बी नो ब्रेक, टुडे वी हैव टू फिनिश दिस। मुझे तो मजा आता है आपकी बैच के साथ, ये सब आंसर देते हो ना आप लोग, बहुत मजा आता है फिर। बेटा नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे। सैटरडे को वी डू नॉट हैव सेशन, आई डोंट नो व्हाई। सैटरडे को कोई छुट्टी आया है क्या? क्या है डेट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे पार्टनरशिप चैप्टर। ओके, पार्टनरशिप हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठंड बढ़ गई है बहुत हमारे इधर भी, तो थोड़ा मेरा आवाज का प्रॉब्लम हो गया है, 2 दिन से गला खिचखिच कर रहा है। ओके, सो विल स्टार्ट। अच्छा, इंग्लिश कंप्लीट हो गया, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। ओके ओके ओके, इंग्लिश ओवर। अरे वाह, चलो नाउ वी विल सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। एक और क्वेश्चन करते हैं प्रोडक्ट मेथड का। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 7। 7 नंबर पे आ जाइए, 7 नंबर। विदाउट ब्रेक इट्स ओके ना बेटा? विदाउट ब्रेक?
ये सिंपल चैप्टर ना प्लेटा, यू आर नॉट गोइंग टू लूज अ सिंगल मार्क इन दिस चैप्टर। आप मेरी मेहनत पे पानी नहीं घुमाओगे। हाँ, इसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए, मेरे 2 घंटे आपको अच्छे से करने। ओके, पार्टनरशिप का मैं क्या पढ़ के आऊं बेटा? वॉच माय फर्स्ट 2 सेशंस, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इन लाइव सेशन। वॉच 5th बैच का सेशन। यस बेटा रितु, नो ब्रेक ओनली स्टडी। चलो, वी सॉल्व वन क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। if days if due date is after beta, if due date is after, yes, after statement date, due date is after statement date। चलो 7 नंबर पे आ जाइए, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ये टॉपिक जो ऑप्शन में छोड़ते ना, वो सच में मतलब सीए कोर्स में ऑप्शन रखने का सबसे सिंपल टॉपिक। डू मिनिमम 3-4 टाइम्स रिवीजन। इसमें स्टूडेंट्स आर नॉर्मली मेकिंग मिस्टेक इन डेज कैलकुलेशन, और संकेत सर के स्टूडेंट नहीं करेंगे, आई नो दैट। हाँ, नाउ सी या, following are the transaction took place between x and y। okay, x and y, sir, bill of exchange, मजा आएगा। You are required to make out the account current by product method to be rendered by x to y। x to y को स्टेटमेंट भेजना है, rendered by x to y। तो किसका बुक होगा? अरे x का बुक एंड y का अकाउंट। राइट डाउन, x के ऊपर लिखो बुक, y का अकाउंट। सो हाउ टू राइट इट? y इन अकाउंट करंट विथ x। चलो कॉलम्स बना लो, कॉलम्स बनाओ, चलो चलो चलो। y इन अकाउंट करंट विथ x। स्टेटमेंट डेट, स्टेटमेंट डेट 30th April। सो इंटरेस्ट, 2 पेजेस, 2 पेजेस, आमने सामने के 2 पेजेस। interest up to, take on 2 pages, 30th April 2020, at the rate of 10% per annum, at the rate of 10% per annum। okay, date, particulars, due date, amount, days, product, सेम कॉलम्स। और कैसे लिखने को बोला था मैंने? राइट टू लेफ्ट, प्रोडक्ट, डेज, अमाउंट, ड्यू डेट, particulars and date। चलो ड्रॉ फास्ट, ड्रॉ फास्ट, ड्रॉ फास्ट। इजी छे, इजी छे। थिंक लॉजिकली। ओके, सो एक्स के बुक से अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई। सो एक्स के लिए, एक्स के लिए, फॉर एक्स इट इज लाइबिलिटी। राइट डाउन, फॉर एक्स लाइबिलिटी। Liability means credit balance. So buy balance brought down. Buy balance brought down. And see, whenever it is buy balance brought down, just write out over there, include first day also. Now, what is this? Yes, I'm going to explain one. Yes, just write down, include first day. Include first day. Include first day.
For X, it is liability. Now, you only write, I'm giving you better 5 minutes. Don't refer answer with pencil. With pencil. Received acceptance of X to Y. So acceptance of X. So for X, it is bills payable. It is bills payable. So X की एंट्री क्या होगी? Y अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. So Y को क्रेडिट करना है. Y को क्रेडिट करना है बाय बिल्स पेबल. सॉरी, Y को सॉरी इट्स माय मिस्टेक. Y अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. Y को डेबिट देना है टू बिल्स पेबल. Y टू बिल्स पेबल. अरे फर्स्ट एंट्री Y टू बिल्स पेबल. बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रिएट किया. Y टू बिल्स पेबल. Bills receivable is honored on this due date. बेटा ऑनर हुआ. बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. सो नो एंट्री इन वाइज अकाउंट. नो एंट्री इन वाई. नो एंट्री इन वाई. एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई. सो वाई को हमने गुड्स सेल किए. टू सेल्स. टू सेल्स. एक्स रिसीव्ड चेक फ्रॉम वाई बाय बैंक. बाय बैंक. नाउ दिस इज IMP. Y sold goods to X means X purchases. X purchases. So entry Y sold goods to X means X के books में purchases. So X will pass entry purchases to Y. So buy purchases. Buy purchases. X return sold goods by Y. So to purchase return. To purchase return. And last one, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर. ओके. सो वाई ने जो बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब हमें बिल्स रिसीवेबल था. एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल था. एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर. व्हाट इज द एंट्री? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. सो बिल्स की एंट्रीज आना जरूरी है. वाई टू बिल्स रिसीवेबल. वाई टू बिल्स रिसीवेबल. बेटा फॉर दिस यू नीड अ प्रैक्टिस. आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो एग्जाम में आपको ये आएगा, बट आई एम नॉट देयर टू हेल्प यू आउट. सो यू जस्ट नोट डाउन ऑन क्वेश्चन टू और बाय एंड देन यू कैन पोस्ट इट इनटू नोटबुक. ओके, अभी नोटबुक में पोस्ट करेंगे. अभी नोटबुक में पोस्ट करेंगे. यस. बाय टू, नो एंट्री टू, बाय देन टू. सो हाउ मेनी बाय? 1 2 3. हाउ मेनी टू? 1 2 3 4. सो 4 डेबिट 3 क्रेडिट. 4 डेबिट 3 क्रेडिट. लिखो लिखो लिखो. दिस क्वेश्चन इज नोन एज रेड इंक. सो फर्स्ट विल डू पोस्टिंग पार्ट. चलिए राइट डाउन. 1 April. 1 April. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. रेड पेन से 1 April, बट रेड पेन से हियर इंक्लूड फर्स्ट डे. इंक्लूड फर्स्ट डे. 10,000. 10,000. Include first day. Next. नेक्स्ट इज 7th 2 months ना बेटा. 7th April से 2 महीने. ग्रेस डेज ऐड करो. सो डेट इज 7th April. स्किप 1 लाइन. 7th April to bills payable. To bills payable
10 जून amount is 5,000. Amount is 5,000. Then 10th April, 2 sales. 10th April, 2 sales. Invoice dated 10 May. Means beta due date is 10th May. Amount is 15,000. Amount is 15,000. Very simple. 10th May. X received check 12th April. By bank. By bank. Fifteenth May is a check date. 15th May. April. By purchases. Okay, 15th May का अमाउंट रहेगा यहाँ 7,500. 7,500 हुआ. 15th May by purchases. इसका भी 15th May है 6,000. 6,000. Next. To purchase return 20 April and 15 April. So 20 April ही आएगा. 20 April. To purchase return. Now see, 15 अप्रैल का जो ड्यू डेट था रेड पेन से वही ड्यू डेट इधर आएगा 15th May. सेम ड्यू डेट. अमाउंट इज नॉर्मल पेन. रेड पेन से ड्यू डेट लिखा 15th May. रेड पेन से ड्यू डेट लिखो. सेम ड्यू डेट फॉर परचेसेस. परचेसेस का 15th अप्रैल, तो ये भी 15th May. 15th May इज फॉर परचेस, सो इसका भी 15th May आएगा. And last one, 20 April. Two bills receivable, 20th April, 5,000. Over. Now beta days calculation. Here, including 1st April. So otherwise, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखते थे? Normally you will write 29. Wrong. Here 30 you are going to write. 30, including first day. Opening balance is always including first day. Whenever there is opening balance, buy balance brought down. Remember, जब भी buy balance brought down होगा मतलब पिछले साल में ट्रांजैक्शन हुआ है, so एक दिन इंक्लूड करना पड़ेगा. लॉजिक इज वेरी सिंपल. दिस ट्रांजैक्शन इज ऑन द इन द लास्ट ईयर ओनली, सो इंक्लूड फर्स्ट डे. सो इनवॉइस पे नहीं आएगा. इन बिल्स कैलकुलेशन देयर विल बी अ ग्रे स्टेज. नॉर्मल सेल परचेस नो ग्रे स्टेज. नॉर्मल सेल परचेस नो ग्रे स्टेज. सर थर्ड एंट्री एक्सप्लेन कीजिए. बिल्स रिसीवेबल accepted by Y is honored on this due date. So beta bills receivable accepted by Y. उसने पैसा दिया. So what is the entry? Bank account debit
टू बिल्स रिसीवेबल। सो वाई का कोई संबंध है क्या? बैंक को डेबिट दिया और बिल्स रिसीवेबल कैंसिल किया बेटा, तो वाई का संबंध ही नहीं आया ना ये एंट्री में, इसलिए नो एंट्री इन वाई, नो एंट्री इन वाई। ओके, यस। अदरवाइज और कुछ शक या सवाल? अरे बाप रे, मेरा मोबाइल बंद क्यों हो रहा है? वाइफ को बोलना पड़ेगा नया मोबाइल लेके दे एनिवर्सरी को। चलो, मोबाइल में क्या दिक्कत आया? ओके, चलिए ठीक है। सो यहां पे अभी हम लोग और कैलकुलेशंस करते हैं। 30 तारीख, 15 मई। नाउ 15 मई is after 30th April. So whenever, see, whenever due date is after statement date, so इधर लिख के रखो statement date, and due date is after statement date, then निगेटिव डेज, निगेटिव डेज, इतना याद रखो। सो ये क्वेश्चन में निगेटिव डेज लिखने हैं। सो 15 दिन निगेटिव लिखा जाएगा, 15 दिन निगेटिव लिखा जाएगा। पंद्रह दिन निगेटिव लिखा जाएगा। 10 जून इज ऑल्सो निगेटिव। 10 जून मतलब 31 + 10, 41 निगेटिव, 10 निगेटिव, 15 निगेटिव, and this 10 is positive. Ha, now, yes, beta. Only, otherwise you have one option. Instead of negative, you can write on the opposite side. You can write product on the opposite side. What do you think? Opposite side, or you will write it as negative, beta? Charger. Instead of writing negative, yes, negative is easy, na? Negative easy hai. Yes, negative is easy. Beta, 15th May is a due date, which is sorry, ड्यू डेट इज आफ्टर स्टेटमेंट डेट, तो आपको वो निगेटिव लिखना है। निगेटिव आपको लिखना है। 5000 into 41, so you can take on calci memory plus 5000 into 41. Do one thing, first memory recall कर दीजिए पूरा। 5000 into 41 memory plus, you are getting answer 2,05,000 negative। 15,000, sorry, one more time on calci, please make it 0, memory 0 कर दो। memory recall button, press it for 3 to 4 times। कैसियो वाले memory recall button, there should not be m in your calci बेटा। m means in memory, m for memory। memory में कुछ नहीं है, वो चेक करो। yes, is 0। okay, हाँ, now 5000 into 41 memory minus में डालो, because it's a negative। whenever it is negative, do it on memory minus। 15,000 into 10 memory minus. So this is 1,50,000. 1,000 into 15 memory minus 15,000 negative. And 5,000 into 10 memory plus, because it's a positive. And now please recall memory button 2 times.
व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग ऑन कैल्सी? चलो कैल्सी पे क्या आंसर मिल रहा है आप लोगों को? कैल्सी में क्या आंसर मिलेगा आपको? आई एम गेटिंग द आंसर -3,20,000. -3,20,000. -3,20,000. I am getting the answer -3,20,000. डू कैल्सी का पूरा मेमोरी वापस 0 कर दो. सो डेबिट साइड -3,20,000. नाउ डू इट ऑन क्रेडिट साइड. 0 कर दो. अगेन मेमोरी प्लस फंक्शन. 10,000 into 30 मेमोरी प्लस पॉजिटिव साइन 3 lakhs. 7,500 into 15 memory minus because negative sign है 1,12,500. And 6,000 into 15 memory minus because negative sign is there 90,000. Take a total positive 97,500. Now I just want to check your mathematics. What is the difference between these two? 97,500 positive and negative 3,20,000. So what is the difference? What is the difference? Yes, tell me. Difference. 3,20,000 and 97,500. What is the difference, beta? चलो जल्दी से बोलो. डिफरेंस देखो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे होनहार स्टूडेंट्स. मैथमेटिक्स देखो इनका. ओनली तन्मित कौर आंसर करेक्टली. ओनली तन्मित कौर. एक ही स्टूडेंट है वो आंसर इट करेक्टली. ऑल स्टूडेंट. अरे बेटा सच में मैथमेटिक्स आपका क्या है? 97,500 माइनस 3,20,000. तो ये कितना डिफरेंस होगा? 97,000 प्लस 3,20,000. सो करेक्ट आंसर इज 4 लाख. कैसे होगा रे आप लोगों का? 17,500. क्या कर रहे हो बेटा? डिफरेंस ये स्कूल लेवल दक्ष करता है ये. 4th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स. 4,17,500 only core answered it correctly. I have written all these figures. Credit side is more. Negative था. Number 1, 2 balance of product. To balance of product. I am ashamed कि मेरे पास इतना टेंशन वाला काम हो गया यहाँ पे. यू आर टेकिंग निगेटिव फिगर्स बेटा. आप ऐसा लेते हो. मैं बोल रहा हूं टेक अ डिफरेंस. सुधर जाओ जल्दी से मैथमेटिक्स में. इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिक्स. डू प्रैक्टिस. ये बेसिक था. 4,17,500. 4,17,500. क्रेडिट पॉजिटिव साइड थी एंड डेबिट निगेटिव थी. सो क्रेडिट इज मोर देन डेबिट.
and take proper difference. Number 1 पे opposite side 30th April beta, sorry, not 30th June, 30th April. On the opposite side 30th April मैं सदमे में चला गया हूं. By interest on product, balance of product. So what is product का balance? 4,17,500 into कितना परसेंट है? 10% into 1/365. 114.38. 114.38. And now amount difference. I think amount में इधर कितना टोटल आया? Your total is 97,500. पंद्रह पाँच 20, 25 और एक 26, 26,000. So by balance carried down. This is number 2 and now this is number 3 balancing figure. मुझे तो नींद नहीं आती थी, ये सब मैंने गलत किया रहता तो. -10,000, -7,500, -6,000, -114.38, 2385.62. मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मिस्टेक्स मत कीजिए. दिस इज रीडिंग प्रॉब्लम 2385.62. कंसाइनमेंट के 3 TY के क्वेश्चंस एंड इपोक मेथड ऑफ अकाउंट करंट. आई विल गिव इट इन दी बेटा रिकॉर्ड. I will give it in the recorded one. This is reading problem when due date is after statement date. आपको आपकी गलती का एहसास हुआ क्या? Mistakes that you have done बेटा, mistake that you have done. चलो एटलीस्ट वो तो भी बताओ. अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है रे. मत करो मिस्टेक्स. ये टॉपिक फुल मार्क्स देके जाते हैं. ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछती. आयशा, आई वोंट एक्सपेक्ट दिस थिंग्स फ्रॉम यू. मनीष जैन, नहीं एक्सपेक्ट करता हूं मैं ये गलतियां. या पूरी मेहनत पे पानी घुमाते हो. एक सिंपल मिस्टेक क्या है ये? और मैंने लिख के दिया टाइमलाइन, टेक अ डिफरेंस. कितना स्पून फीडिंग करवाओ भाई. यही तो रीजन है रिजल्ट निगेटिव आने के. ऑल ऑफ यू वांट कि रट लो एंड गो इनटू एग्जाम और वो पूरा बाहर निकाल दो. फाउंडेशन हो जाता है भाई. इंटर कैसे होगा इफ योर बेस इज नॉट क्लियर? और कोई बोलेगा नहीं आपको बेस क्लियर करो. यू हैव टू डू इट बाय योर ओन. कितने भी लेक्चर्स देखो, कितनी भी बढ़िया फैकल्टी रहने दो, जब तक खुद हाथ में नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा. And you are doing such silly mistake. Only one student is answering correctly. Out of the एक तो कोई लाइव लेक्चर में पसंद नहीं, सिर्फ लास्ट में when you enter into ICU कि बाबा अभी हमें सब प्राइवेट क्लासेस खत्म हो चुके, नाउ लेट्स सी कि बाबा ICU ऐप पे ये सब एग्जांपल्स देख लेते हैं.
ओनली गिविंग ये प्रॉब्लम, नाथ एंड ब्रदर्स वी वांट टू हेल्प यू आउट। अरे ये क्वेश्चन की लेवल है, ये क्वेश्चंस आते एग्जाम में, फिर इधर आप लोग फेल्यूर के टूवर्ड्स जाते हो। व्हाई? बिकॉज सर वी वांट ओनली सिंपल थिंग्स। फैकल्टी ने थोड़ा डिफिकल्ट सिखाया तो एकदम से क्लास बकवास है, नहीं अच्छा समझ में नहीं आता। अरे यू हैव टू इंप्रूव योर लेवल। फैकल्टी इज गिविंग 100% of all ICI board of studies cap pe. There are limitations. You have to finish your syllabus within time. And this is why we created beta some small sessions. We are also improving. We are also giving 1-2 lectures more, but not more than that. जितना जरूरत है उतना काफी है। But we won't take this help. हमें लास्ट में याद आएगा, चलो नाउ एवरीथिंग इज ओवर, चलो बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऐप के लेक्चर्स देखते हैं। वॉच इट फॉर 2 to 3 times, डेफिनेटली विल गेट द सक्सेस। वापस देखो ये सेशंस, क्या है उसमें, भूलना बीमारी नहीं है, भूल सकते हो लेक्चर्स, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉल करो, सी माय प्रीवियस सेशंस, प्रैक्टिस इट। आज की मिस्टेक बहुत बुरी लगी है मुझे, ओनली वन स्टूडेंट आंसर्ड इट करेक्टली, डिफरेंस बिटवीन दिस टू। चलो ठीक है, ये पुणे ब्रांच के स्टूडेंट्स में एक्सपेक्ट था मुझे, बट आई थिंक साउथ स्टूडेंट्स और रिमेनिंग स्टूडेंट्स विच आर फ्रॉम बिहार और ये सब आप देते हो ना आंसर्स, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। मेरे पास का जो क्राउड आता है ना फेस टू फेस में, तो आई कैन अंडरस्टैंड ये मिस्टेक्स वो करने ही वाले हैं, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। सी आईसीआई ने जहां जहां पे निगेटिव डेज है उधर उन्होंने सामने लिख दिया बैलेंस, उधर उन्होंने बैलेंस सामने लिख दिया। सो यू वांट बैलेंस ऑन द अपोजिट साइड और सेम साइड, यू ओनली आंसर इट। कि हमने क्या किया, सी, so instead of negative 41 and 2,05,000, now this is negative, so I says written it in study material on the opposite side 41 and 2,05,000, you can see here, instead of writing on negative sign। क्या करना है, so everything will be positive in ICS study material, so you want to write but your one line will be increased by red ink interest करके, so वैसा करना है क्या, या you will write it on the negative sign only and will take a proper total, you only tell me क्या चाहिए आपको। नाउ सी दिस इज ऑल्सो निगेटिव 10 and 1,50,000, यू कैन चेक हियर 10 and 1,50,000 ऑन द क्रेडिट साइड। सो स्टडी मटेरियल में यू विल गेट इट ऑन द अपोजिट साइड। इफ क्रेडिट में निगेटिव है, क्रेडिट में निगेटिव है, तो यू विल गेट इट ऑन द अपोजिट साइड, डेबिट साइड में। सी ये देखो 15 and 1,12,500, सो वेयर यू विल गेट ऑन द डेबिट साइड 15 and 1,12,500। सो क्या करना है, वन लाइन इंक्रीज हो जाएगा टू रेडिंग इंटरेस्ट एंड बाय रेडिंग इंटरेस्ट, बाय रेडिंग प्रोडक्ट। क्या करना है, निगेटिव साइन में कर सकते हो या अपोजिट साइड पे, यू गॉट दी बोथ करेक्ट आंसर्स बेटा, बोथ विल गिव यू द सेम आंसर, ओनली नो निगेटिव थिंग्स in ICI material, and in my way beta we will write on the same side, so it will save over time also, नहीं तो वापस लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा। चलो वन लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, दैट इज इपोक मेथड, सॉरी बैंक का मेथड। लास्ट 20 minutes I need interest। C, if you are doing interest method, first I will explain you interest method, this is balance of product था, product method किया, now how to calculate beta interest method। So same question, that is illustration number 1, up to dates it will be same, up to dates it will be same,
See, instead of product, your column will be interest. Product के बदले में it will be interest. So you can copy beta. Same answer. Illustration 1, we are going to solve method. You can write method, interest method. So write down same columns, patafat. But instead of product, you give answer interest. So last column is not product, last column is interest. So copy paste कीजिए all columns and even question को भी copy paste कीजिए. So you can see here, instead of product, you will get interest. और same question copy कीजिए, answer 16 September. Yes, and write down over after copying this. Two sales, one 1st October, 200 and 123. Don't write it in interest column. Just write up to dates column. तो कोई भी interest column में कुछ नहीं लिखेगा, same copy paste करेगा. To cash, 1st November, 330.92. 1st December, to cash, 1st December, 330. Yes. College life. $330.62. 1st Jan, to cash, 2 sales, 1st February, 20, 0. 1st October, buy cash, 1st October, 90. 1st December, buy purchase, 21st October. 5th December, buy purchase, 1st Jan, 500, 123, 62, 31, 31, 200, 1st Jan, buy purchase, 10 December. Interest column is pending. Interest column is pending. Write down over after copying this. After copying this, you can write over. You only tell me, I have to provide you one session. To those students who want to attend it in live can join on Zoom. मेरे साथ Zoom पे join हो जाना. I will provide you Pune branch number. So foundation के बच्चों का एक session I will take it on Saturday in the morning 9 to 10:30 वगैरह ले लेंगे. So Zoom पे so we will create a group और उस पे मैं सेशन ज्वाइन करवा दूंगा और वही लेक्चर में रिकॉर्डेड में बोर्ड ऑफ स्टडीज के ऐप पे डाल दूंगा. ओके
तो आप लोगों को जूम पे मैं नंबर दे देता हूँ पुणे ब्रांच का, तो वो लोगों को बोलता हूँ लिस्ट बना लो एंड आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा फिर, या दे विल सेंड यू योर नंबर, आप ज्वाइन करवा देना। और वो लोगों के साथ यदि आपको लाइव में अटेंड करना है, इफ यू वांट रिकॉर्डेड वन, नो प्रॉब्लम। 3 क्वेश्चंस, इपोक मेथड, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, लास्ट मेथड है, एंड कंसाइनमेंट के 3 क्वेश्चन। सो आई विल नीड यूर 1.5 hour to 2 hours। इफ यू ऑल आर रेडी, तो आप मुझे, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, आई विल गिव इट इन रिकॉर्डेड वन एंड यू कैन ज्वाइन ऑन जूम। यूट्यूब पे हम लोग बाद में डाल देंगे वही सेशन। तो पुणे ब्रांच का नंबर सिर्फ लेके रखो, आप वो मैडम को कांटेक्ट करो, वो आपको एक ग्रुप बना देंगी एंड सैटरडे को मॉर्निंग में हम लोग लाइव आ जाएंगे 9 o'clock। पुणे ब्रांच का नंबर है ये। आई वोंट प्रोवाइड यू माय पर्सनल नंबर, ओके। हाँ, पुणे ब्रांच आईसीआई विल टेक केयर कि आपको वो ग्रुप बना के उसमें लाइव में ले लेंगे। और कॉल इन द आफ्टरनून करना, ओके। सो सैटरडे को मॉर्निंग में 9 o'clock का सेशन रखेंगे, बिकॉज नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट दैट वी विल फिनिश दैट कंसाइनमेंट रिमेनिंग 3 प्रॉब्लम, दोज हु वांट टू अटेंड इट इन लाइव, एंड आई विल अपलोड दैट सेशन ऑन बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप। So those who don't want to attend it in live, so you may contact Pune branch and ask them to, sir, we want to join Zoom on Saturday morning 9 a.m. ठीक है, चलेगा बेटा आप लोगों को? वेरी गुड। So I will explain 2 methods in that batch recorded में। 200 into, now see the calculation, 6% per annum. See the calculation, 6% per annum, 200 into 6% into 123 divided by 365, 4.04 memory plus में डाल दो, memory plus। Now how to calculate बेटा? How to calculate? 200 into 6% into 123 upon 365. Okay. So here interest we will calculate, not product. If product, we will just multiply 200 into 123. But if it is interest, we will divide by 365. हम लोग क्या करेंगे? 365 से डिवाइड भी करेंगे। Then 300 into 6% into 92 divided by 365, memory plus 4.53. 4.53। ओ सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक, वापस एक बार करता हूँ। 200 इंटू, पहले तो मेमोरी 0 कर देता हूँ। 200 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइड बाय 365 मेमोरी प्लस, ये करेक्ट आया। 330 इंटू 6% इंटू 92 डिवाइड बाय 365 मेमोरी प्लस 4.99, सॉरी, 330 इंटू 6% इंटू 62 divided by 365 memory plus 3.36, 600 into 6% into 31 divided by 365 memory plus 3.06, 3.057 means 06, and here it is 0. Memory recall. What is the total? Debit side 15.54, 45, 15.45 or 46 you can consider. 46, 15.46. Yes, beta. You have to confirm
कि यस वी वांट टू ज्वाइन। हाँ बेटा, आज ही कांटेक्ट करना 4 बजे के बाद। आफ्टर 4 यू कैन कांटेक्ट। चलिए 90, अभी चलो मेमोरी 0 कर दो, मेमोरी 0। 90 इंटू 6% इंटू 123 डिवाइड बाय 365, मेमोरी प्लस 1.82, 500 इंटू 6% इंटू 62 divided by 365, memory plus 5.09 means 10, 500 into 6% into 31 divided by 365, memory plus 2.55, and 200 into 6% into 31 divided by 365, 1.02. Memory recall 10.48. Memory recall 10.48. Debit is more. Debit is more. What is the difference? See, now number one, by balance of interest, first Feb, what is the total? 15.46. See, 4.97. 4.97, I'm getting the total. 15.46 minus 10.48. 15.46 minus 10. 4.98. And now this is number one. On the same side, we will write two interest 98, and then balancing figure of amount by balance carried down 1484.98, 1484.98, and balancing figure is 194.98. So this is a balancing figure. Number 3. First, difference of product star mark. Then on the opposite side, see, here you have divided by 365, days divided by 365, and in product method you don't divide by 365. So at the end we will divide 365. So this is a difference between interest method and product method. Product method में क्या करते हैं? Last में 365 से divide करते हैं, 1 day APS, and that's why I told you wait for some time. Okay. And in case of interest method, लास्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं 365 से. Interest method, sorry, every time you will divide by 365. So which is simple one beta, product or interest? तो product simple है या interest simple है? Yes बेटा, product simple है या interest simple है? Sorry, 15.46 right side पे. Yes, 15.46 correct है अंकुर. 15.46. Okay. प्रोडक्ट इज सिंपल ना बेटा. इंटरेस्ट में एवरी टाइम यू हैव टू डिवाइड बाय 365. प्रोडक्ट में एट द एंड यू हैव टू डिवाइड 365. सो प्रोडक्ट मेथड इज मोर इजी. सी बेटा, आई कैन एक्सप्लेन यू मेथड नंबर 3, बट मुझे लगता है मेथड नंबर 3 एक्सप्लेन किया तो और ज्यादा डिफिकल्ट जाएगा. सो इंस्टेड ऑफ दैट वी विल सॉल्व इट इन दी जूम बैच. तो आप लोग परसों 9 o'clock को हम लोग मिलते हैं. बट इंस्टेड ऑफ दैट सॉल्विंग टुडे, तो वहां पे आपको और ज्यादा अच्छे से समझेगा एंड रिकॉर्डेड वन में दूंगा. यू, आई होप यू आर क्लियर विद नाउ मेथड, रेडिंग मेथड, product method and interest method. So all methods are correct beta. Now we have to solve epoch method and बैंक स्टेटमेंट का मेथड इन द नेक्स्ट सेशन. एक दिन का शॉर्ट हो गया. सो यस ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी विल इंक्रीज 1 डे. तो ये करेंगे नेक्स्ट बैच में, बट अभी के लिए इतना काफी है.
So today I will leave you early to join you early in the on the Saturday. तो सैटरडे को मिलेंगे. यस इट्स ओके बेटा, मिस कैलकुलेशंस. सर पुणे ब्रांच का आप लोग वेबसाइट पे भी देख सकते हो, पुणे ब्रांच ऑफ आईसीआई, वहां पे मिल जाएगा आपको. यू कैन कॉन्टेक्ट देम कोचिंग क्लास में. चलो. So any difficulty, please ask me any difficulty. Otherwise we will end up with the session because today you have not taken a break also. 2 घंटे के ऊपर आप बैठे हैं. Thanks to your patience. And on Monday we are going to start with partnership. So recorded session में upload कर दूंगा for that 2 methods and consignment के TY के questions. Still if you have any query about regarding all any unit of these 5 units, so you can ask me. Do you think chapter number 6 is difficult or is easy? तो आप लोग बहुत से इंडिया तक आवाज आता है कि चैप्टर नंबर 6 इज वेरी डिफिकल्ट. तो डू यू थिंक कि ये चैप्टर नंबर 6 डिफिकल्ट है या इजी है? चलो बोलो जल्दी. यस बेटा रितु, थैंक यू. इजी है. चलो. सो यस, जय जी प्लीज एंड